Hey you guys, welcome to my YouTube channel. I'm Devyani Sonwane, and if you're new here, please subscribe below. It will really mean a lot to me. So today's video is all my wedding outfits. It's how I get them and everything, every detail about my wedding outfits like shadi lehenga, engagement and sangeet and mehendi and haldi, like all the outfits that I'm gonna wear. So yeah, without further ado, let's get into the video. So as you guys know, I have been to Delhi and I bought two outfits from Delhi. So one is shadi lehenga and sangeet lehenga. So I got them from shadibazaar.com. I mentioned their details in the description box below for you guys. तो मैंने वहाँ से दो खरीदे थे and I shopped like sarees and all of that from Delhi. तो जो मेरा wedding लहंगा है ना, वो उसके लिए 2 months का waiting था and I finally got it after 2 months and I also stitched the blouse. उन्होंने नीचे का पूरा स्टिच करके दिया था बट ऊपर का ब्लाउज रिमेनिंग था, तो वो मैंने अभी स्टिच करवाया है एंड आई विल शो यू माई लहंगा. तो stay tuned. and 2 outfits I am making from scratch, a DIY outfit. तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा. तो इसमें in this video I will show you all the outfits, but the DIY video I have already made it. So if you haven't watched it, so I will mention it above here, so please go and check that out. So for shadi I really wanted to wear red. I mean come on, in Indian wedding you have to wear red, right? और मतलब लाल कलर मुझे वैसे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है. I like hardly have it, like you know, but for my wedding I really wanted a red color का लहंगा, you know, like bride is like no, I mean red, bride in red, you know. तो मुझे लेना ही था. बट व्हेन आई ट्राइड द रेड कलर लहंगा इन शॉप, बट इट वॉजंट लुकिंग गुड ऑन मी यू गाइज. तो मैंने थोड़ा सा रेडिश शेड में पिंक एंड रेड मिक्स काइंड ऑफ लहंगा लिया है. यू विल सी दैट ऑफ कोर्स. तो या इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स एंड थोड़ा डार्क शेड है एंड इट इज़ एक्चुअली डुप्लीकेट. या ऑफ कोर्स ओरिजिनल तो हम नहीं ले पाएंगे ऑफ कोर्स. So yeah, it's a replica of a very famous designer. मैंने बहुत सारे शॉप में भी ढूंढा बट मुझे जैसे चाहिए था मुझे फाइनली मिल गया. मुझे मतलब मेरे वेडिंग लहंगा में ना बहुत सारा ऐसे डिज़ाइन नहीं चाहिए था. मुझे थोड़ा ऐसे कलर दिखना चाहिए, यू नो, बहुत ज़्यादा यू नो हॉच पॉच नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए. तो मतलब मुझे सेम टू सेम उन्होंने मुझे बहुत सारे दिखाए, वो बहुत ज़्यादा भरे हुए भी थे एंड बजट में भी थे, बट मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे. एंड देन इन द लास्ट मोमेंट दे शोड मी दिस लहंगा एंड आई एम लाइक लिटरली अ फैन. आई मतलब देखते ही मुझे प्यार हो गया, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. या होता है गाइस, आउटफिट में से होता है. तो मैंने देखा एंड आई लाइक टोटली वेंट फॉर इट. तो मुझे जैसे चाहिए था वैसे ही मिल गया. मुझे ब्लाउज में भी ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं चाहिए था, ओनली तुम थोड़ा बहुत बूटी वर्क टाइप ऑफ थिंग. तो या वैसे ही मुझे मिल गया एंड या I really love my wedding outfit. Let me know in the comment section if you love my outfits. And yeah, so let's move on to my संगीत outfit. तो it was a lehenga, you know, but मुझे मतलब लहंगा ही नहीं पहनना था. I wanted something different. तो I literally made a one piece out of a lehenga. तो it's kind of a long one piece and the blouse I made like see through cuts in front. तो एक मेरे दिमाग में एक विजन सा था कि I wanted to make some cutouts and see through cutouts in that one piece lehenga. And definitely for sangeet I wanted a mirror work kind of outfit. तो yeah, I fortunately got in, fortunately मुझे वो मिल गया शादी बाज़ार में. And yeah, so I made it into the one piece and but the thing is that it's really heavy. So this is how it looks. And it has, I just didn't add on the back side I didn't add anything, so it is kind of a mesh situation going on the back side. And from front I did this, the cutout thingy, and yeah, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा ये करने में. बहुत सारे मुझे अल्टरेशन करने पड़े, but finally the results are very nice.
that was about my Sangeet outfit. And so for my haldi and mehendi outfit, I am going to make them, like I made them from scratch. It's a DIY outfit, and of course ये मेरी शादी है, मैं एक DIY outfit ना बनाऊँ तो ऐसे होगा ही नहीं, ऐसा possible ही नहीं है, because you guys seems to love my outfit from scratch videos, and actually it's a one-off videos which got like really love from you guys. तो of course मेरी शादी में तो I have to make a outfit from scratch video. तो हल्दी एंड मेहंदी आउटफिट आई एम गोइंग टू मेक इट फ्रॉम स्क्रैच. तो वो वाला पूरा जो प्रोसीजर है, आई हैव मेड अ होल वीडियो अबाउट इट एंड आई एम गोइंग टू मेंशन इट अबाउट हियर, सो प्लीज़ डू चेक दैट आउट. बट इफ़ यू गाइज वांट टू सी लाइक हाउ they are looking, so I'm going to insert a whole clip over here, so you guys can go ahead and check that out. So yeah, I hope this video is helpful for you. एंड ऑल्सो आई हैव सम विजन इन माई माइंड. मुझे थोड़ा ऐसे वेल चाहिए, थोड़ा लॉन्ग वाला, एंड बहुत सारा ऐसे दिमाग में है. अभी तो आप आउटफिट देख लो, वो भी बनानी है, तो वो आपको मेरे शादी वाले वीडियो में देखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट. So that's it for today, you guys. If you like the video, hit the like button, comment down below and subscribe if you haven't already. It will mean a lot to me. So for now, bye, see you in the next video. अरे बापरे, अंशू बघ रे, असे एकत्र बोलले रे. अगं सुंदर वाटतं, एकदम छान वाटतंय. एकदम छान वाटतंय एकदम. जल्दी जाते मग तुम्ही कोणीच दिसत नाही, चष्मा नाही. हा इकडे बघ माझ्याकडे, थोडत नाही फिनिशिंग काय बेटा, काय होतं? हा जीन्स आहे, आवडला तुला? मस्त दिसते ना एकदम. कशी दिसते दादा मावशी? कशी? फक्त चांगली. कशी ऍक्शन केली होती तू? ओ डुक्कू बी रडू रडू चालू वाटतं.